Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture I will deliver the brand new chapter of your ENT series that is the neoplasia of the ear. You will see the some tumors of the ear here, right? So at the very first is the osteoma या फिर जिसको exostosis भी कहें. They are nothing but the benign neoplasms. Benign neoplasms, they project into the lumen of the external auditory canal, and they are the commonest benign tumors of the external auditory canal. So this is the nice little pinna comes the external auditory canal. Here is the tympanic membrane, right? So this is the external auditory canal. इस external auditory canal का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये कार्टिलेजिनस होता है और अंदर जो होता है वो बोनी पार्ट होता है. ठीक है, इस बोनी पार्ट में से ये बेनाइन ट्यूमर्स निकलते हैं. ठीक है, ओस्टियोमास. ओके, and they actually project into the lumen of the external auditory canal. They are of different types. One is the sessile, one is pedunculated, and one is the diffuse type. अच्छा, sessile type is the most frequent type. They can be single, they can be multiple, may involve the both the sides, both the sides of the external auditory canal actually. And sorry, I mean to say both the sides of the ear. They can involve the right side, they can involve the left side. I mean, they can be unilateral, they can be bilateral. So sessile means they have no pedicle, they are like this. Okay, you can't see any pedicle, they are actually attached directly with the bone here, right? So this is the most frequent type. They can be single, they can be multiple, they can be unilateral, they can be bilateral. Okay, this is the most frequent type. When it comes to the pedunculated type, so you will come to see this pedicle. Can you see the pedicle? And here will be this benign tumor. So they are rare, and most of the times they are single. They are not multiple in number, they are single in number, and they are unilateral involving one ear only. और इसको हम ट्रू ओस्टियोमा कहते हैं. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओस्टियोमा. दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन. And comes another thing, that is the diffuse type of the exostosis. This is not actually a true osteoma. This is simply the hyperosteosis. इस बोन की अवर ग्रोथ एक्चुअली को हम डिफ्यूज़ वैरायटी में कंसीडर करते हैं. जो मेन टाइप्स होती हैं एक्सोस्टोसिस की वो सिजाइल और पेडंकुलेटेड होती हैं. ठीक है, डिफ्यूज़ इज सिंपली द हाइपरोस्टियोसिस, अवर बोनी डिपोजिशन रादर देन द ओस्टियोमा. ठीक है, और ये खास करके टिम्पेनिक प्लेट में डेवलप होती है. टिम्पेनिक प्लेट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन दैट एक्चुअली इज़ इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द external auditory canal. This is the, let's suppose, external auditory canal की anterior wall, and in the anterior wall this is considered, let's suppose this is the posterior wall, this is the anterior wall, this is the bony part of the anterior wall, this is the tympanic plate that makes up the anterior wall of the external auditory canal. So there is simply the hyperosteosis. You can see there is the bony overgrowth. Bone has overgrown, hyperosteosis. So this is said to be the diffuse variety, right beta? Okay. द etiology इज़ नॉट नॉन कि क्यों ये सिजाइल पेडंकुलेटेड और ये डिफ्यूज़ वैरायटी के ट्यूमर्स बनते हैं, ओस्टियोमास बनते हैं. etiology इज़ नॉट नॉन, but it is considered that it is most common in swimmers, and other factors that contribute to development of this condition is the trauma of the ear and long standing irritation. कोई बड़े अरसे के लिए कोई इरिटेशन कान के अंदर मौजूद हो, जैसे कि कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी मौजूद हो बड़े अरसे के लिए, तो वो इरिटेट करती रहेगी वाल्स को और फिर वहाँ पे ओस्टियोमा बन सकता है. ठीक है, ओके, दैट्स इट. What will be the clinical presentation if you are suffering from this condition? Initially you will be asymptomatic, but अगर ये ट्यूमर enlarge हो जाए साइज़ में तो symptoms आएंगे. ओके, राइट. या सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स क्या आएंगे बेटा? या symptoms like debris will be collected behind the swelling and will cause the irritation. If let's suppose this is the pinna and this is the external auditory canal and this is the, let's suppose, osteoma looking more like a sessile osteoma, और इसके पीछे जो है डेब्रिस जो है वैक्स वगैरह जमा होती जाएगी, डेब्रिस जमा होता रहेगा
और ये इरिटेट करता रहेगा वॉल्स को। अब जाहिर सी बात है ये यहाँ से डेब्रीज निकल तो सकता नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। सो पहला सिम्टम, अगर आपका ऑस्टियोमा काफ़ी इनलार्ज है तो पहला सिम्टम क्या होगा, डेब्रीज विल बी कलेक्टेड बिहाइंड द स्वेलिंग एंड दिस डेब्रीज विल बी कॉजिंग इरिटेशन। नंबर 2, लेटर देर विल बी द डीफनेस ड्यू टू द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज में बी ड्यू टू दिस ऑस्टियोमा, ब्लॉकेज में बी ड्यू टू दिस डेब्रीज, ठीक है। If this osteoma or this debris completely obstruct this canal, so there will be conductive deafness. Also there will be the bony hard skin covered swelling in deep bony part of the external auditory canal। ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग है। जब आप कान के अंदर इसको एग्जामिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बड़ी ये हार्ड सी स्वेलिंग है जो कि बोन में से आ रही है और ये स्किन कवर्ड स्वेलिंग होती है, ठीक है, बोनी पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ठीक है। तो बेटा क्या सिम्टम्स हैं, 3 क्विकली रिकेप करते हैं। सबसे पहली बात कि क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर छोटी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर कोई मसला नहीं होता, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है बेटा। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑस्टियोमा काफ़ी बड़ा है तो फिर इसके पीछे डेब्रिस कलेक्ट होता रहेगा, क्योंकि इसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। डेब्रिस कलेक्ट होगा और वॉल को इरिटेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इफ़ दिस इज़ लार्ज इनफ and it is causing the complete obstruction of the canal, so this osteoma or this debris, if they are completely obstructing the canal, so there will be the conductive deafness, right? Number 3 thing, on examination you will see there is the hard mass which is covered by the skin present in the bony part of the external auditory canal. Simple, okay. Most of the times this osteoma is confused with boil, कि हमें लगता है कि ये कोई फरंकल है, कोई बॉयल है, लेकिन बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बॉयल होता है वो कार्टिलेजिनस पार्ट में होता है और बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन जो ऑस्टियोमा होता है वो बोनी पार्ट में होता है और ये इतना पेनफुल नहीं होता। ट्रीटमेंट की बात करें तो बेटा रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यू नीड टू फ्री इट फ्रॉम द कलेक्टेड डेब्रिस। अगर एक बार आपको ये ऑस्टियोमा डेवलप हो चुका है तो आपको चाहिए है कि आप रेगुलरली अपना कान साफ़ करें, डेब्रिस को रिमूव करवाते रहें और उसके बाद इस ऑस्टियोमा को रिमूव कराना ही इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर ये ऑस्टियोमा रिमूव नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है रिकरेंटली ये डेब्रिस जमा होता रहेगा और डिफनेस वगैरह भी हो सकती है। सो रिमूवल ऑफ दिस ऑस्टियोमा थ्रू द पोस्ट ओरल अप्रोच इज़ इंडिकेटेड व्हेन इट इज़ लार्ज इनफ एंड कॉजिंग डिफनेस। अगर ऑस्टियोमा काफ़ी बड़ा है और डिफनेस करवा रहा है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसका रिमूवल कैसे होता है, इसका रिमूवल कान के थ्रू जाके नहीं होता, इसको पोस्ट ओरल अप्रोच से रिमूव करते हैं। यू टेक दिस पिन्ना एंड यू कैन सी द मेस्टोइड प्रोसेस बिहाइंड, यू एक्चुअली ड्रिल थ्रू द बोन और बोन के थ्रू जाके फिर पीछे से इस ऑस्टियोमा को रिमूव कर देते हैं, राइट बेटा। ओके, तो इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। Now let's go a little ahead and now we'll see some other benign tumors of the external auditory canal other than the osteomas. Other tumors are very rare like ceruminoma, adenoma or papilloma. They are very rare, boys. They are very rare. Like the ceruminoma, it actually originates from the ceruminous glands of the external auditory canal, which are present in the outer cartilaginous part. The osteomas arise from the what part of the external auditory canal? Bony part of the external auditory canal. The ceruminoma arise from the ceruminous glands, which are present not in the bony part but in the cartilaginous part. What will be the presentation of the patient with ceruminoma in the external auditory canal? जाहिर सी बात है इतना बड़ा ट्यूमर होगा, कैनाल को ब्लॉक करेगा, डिफनेस होगी और पेनलेस स्वेलिंग भी होगी। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि इसको आप सर्जिकली एक्ससाइज कर दें, ठीक है। एडिनोमा, पेपिलोमा नॉट डिस्कस्ड, दीज आर द बिनाइन ट्यूमर्स। कैंसर्स भी हो सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, लाइक कार्सिनोमा ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, कार्सिनोमा ऑफ द मिडिल ईयर, ठीक है। कौन से कैंसर्स होते हैं? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा एंड द एडिनो कार्सिनोमा। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैरायटी इज़ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा को हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं, मोस्ट कॉमनली पिन्ना पे होता है और इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है स्ट्रॉन्ग सनलाइट। मेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है बेटा। तो 3 तरह के कैंसर्स होते हैं, पीछे हमने बिनाइन डिस्कस किए, यहाँ पे कैंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे कॉमन, सबसे फ्रीक्वेंट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। बेजल सेल कार्सिनोमा खास करके पिन्ना की स्किन पे होता है, बाहर ऑरिकल की स्किन पे, खास करके जो कंट्रीज़ जिनमें सनलाइट का, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है
और जहाँ पे बहुत सन का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जहाँ पे बहुत सन का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग, उनकी स्किन भी डार्क होती है, ज़ाहिर सी बात है, और बिकॉज ऑफ दैट increased sun exposure, they develop the basal cell carcinoma, not only on the skin of the pinna, but they develop the basal cell carcinoma on the skin elsewhere as well, right? खास करके मेल्स में ये ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा. So once you develop the carcinoma, the clinical presentation will be deafness, blood stain discharge. ये malignancy इसकी typical पिक्चर है. आप नोज़ में भी जब आप आगे पढ़ोगे तो यू विल सी इफ़ देयर इज़ एनी मेलिग्नेंसी इन द नोज़, पेशेंट कम अप विद द ब्लड स्टेन डिस्चार्ज. कान में दर्द होगा, ईयर एक के साथ स्वेलिंग और समटाइम्स फेशियल पैरालिसिस, ठीक है बेटा. ओके, सो इफ़ यू हैव कैंसर इन द ईयर, देयर विल बी डीफनेस, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, earache and swelling, sometimes facial paralysis. On examination, you will see in the external ear or in the middle ear there is the friable fungating mass that is filling the external auditory canal and it bleeds on the touch. If this is the external auditory canal and this is the auricle or the pinna, mostly pinna पे कौन सा ट्यूमर बनता है, कौन सा कैंसर बनता है? बेजल सेल कार्सिनोमा. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन सकता है, ठीक है. बिनाइन ट्यूमर्स में और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में फ़र्क क्या होगा? जो बिनाइन ट्यूमर थे उनमें इन्वेजन मेटास्टेसिस नहीं हो सकती. ये जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है इसमें इन्वेजन और मेटास्टेसिस की कुव्वत है, ठीक है. जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो ये बड़ा फ्राइबल सा मास है, फंगेटिंग मास है, यानी बाहर आ रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को फिल कर रहा है, और जब आप इसको टच करोगे तो टच पे ये ब्लीड करेगा, ठीक है बेटा. इसके अलावा डायग्नोसिस बनाने के लिए कि किस तरह का ये कैंसर है, तो हम इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ. या फॉर डायग्नोसिस यू परफॉर्म द पंच बायोप्सी फ्रॉम द मैस. ओके, एक्चुअली you take the sample from this fungating mass and you then perform the biopsy and you actually look at the cells of that tumor and then you identify what type of outgrowth is this. Other than punch biopsy, you perform the routine cytology of the discharge. ज़ाहिर सी बात है बेटा, जिसको अगर मेलिग्नेंसी होती है कान के अंदर तो उसको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है और उस डिस्चार्ज की भी आप साइटोलॉजी परफॉर्म करते हो और आप उन सेल्स को देखते हो कि किस तरह के सेल्स हैं, ठीक है. और उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है आपको मेलिग्नेंट फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है. यू परफॉर्म द CT एंड MRI टू डिटेक्ट द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़, के ये कैंसर यहीं पर मौजूद है या यहाँ से बहुत आगे एक्सटेंड कर चुका है. द ट्रीटमेंट ऑप्शन हैज़ टू बी द सर्जिकल एक्सिजन और रेडिएशन थेरापी या फिर दोनों, ठीक है. Either surgical excision or radiation therapy or both. The prognosis is poor because of its ability to spread to the nearby lymph nodes and ability to spread inside the cranium into the brain. Therefore, the malignant cancers of the ear, they have got poor prognosis, right beta? Okay. So after the benign and the malignant tumors, here comes few more tumors that are very specific. Let me explain you. One is the glomus tumor, right? Okay, so this glomus tumor is the tumor of the glomus bodies which are present on the dome of the bulb of the internal jugular vein. So if you remember that this is the tympanic membrane, this is the epitympanum, and below the tympanic membrane comes the hypotympanum. This is the floor of the tympanic membrane and below is the bulb of the internal dome of the bulb of the internal jugular vein. If you remember the anatomy, this is the dome of the bulb of the internal jugular vein. In this bulb of the internal jugular vein you have some nice little bodies. These bodies are actually the glomus bodies. These are actually the glomus bodies. This tumor is, by the way, somewhere outside the ear, and yeah. So glomus tumor,
arise from the glomus bodies present in the bulb of the internal jugular vein, dome of bulb of internal jugular vein, then this tumor actually invades into hypotympanum. This region is the hypotympanum. Actually, this is the extent of the tympanic membrane. This is the hypotympanum. If you see, this is the hypotympanum. So this tumor actually then invades into the hypotympanum. Okay. Okay. Right. So if you are clear so far, so I can now say that, and this glomus tumor beta arising from the glomus body in the bulb of the internal jugular vein and then extending to the hypotympanum, it is said to be the glomus jugulare. Why it is said to be the glomus jugulare? Because this glomus tumor is arising from the internal jugular vein, so jugulare. आपको पता है बेटा, ये यही सेम ग्लोमस बॉडीज़ इंटरनल जुगुलर वेन के अलावा कहीं और जगहों पे भी प्रेजेंट होती हैं, तो फिर वहाँ से भी ग्लोमस ट्यूमर राइज हो सकता है. जैसे कि सिमिलर ग्लोमस बॉडीज़ आर प्रेजेंट ऑन द प्रमोंटरी राइट ओवर हेयर. दे आर प्रेजेंट ऑन द टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. राइट, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बाय द वे इस फ्लोर से निकलती है कुछ इस तरीके से. तो द ग्लोमस बॉडी इज़ आल्सो प्रेजेंट इन दैट ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. So that glomus tumor can arise from the glomus bodies present in the promontory, present in the glossopharyngeal nerve. In that case, glomus tumor is not called glomus jugulare, but in that case, glomus tumor is called glomus tympanicum, right? Okay. From wherever it arises, it arises from the glomus body of the internal jugular vein, glomus body of the promontory or the glossopharyngeal nerve. The features are similar, like it is very much slowly growing tumor. ठीक है, it is very much slowly growing tumor, and when it comes into the middle ear through this hypotympanum, it can perforate the tympanic membrane, right? Obviously, as you saw that the tumor from the internal jugular vein, from here it came into the hypotympanum, and even if it develops here, it can come into the middle ear, and from the middle ear it can go and perforate the tympanic membrane and can enter into the external auditory canal, right? Okay, slowly growing, comes into the middle ear, perforates the tympanic membrane. From where is it arising? It is arising from the glomus bodies. What are glomus bodies? They are non-chromaffin paraganglionic chemoreceptor tissues. By definition, what are the glomus bodies? Non-chromaffin paraganglionic chemoreceptor tissues, right? Okay, this tumor which is arising from these glomus bodies, they are very vascular, they are locally invasive, and they spread to involve the last 4 cranial nerves, and rarely they involve the 5th and 6th cranial nerve as well. ठीक है, मोस्टली लास्ट 4 इन्वॉल्व होती हैं, रेयरली 5-6 भी इन्वॉल्व हो सकती है, and directly it can extend into the facial nerve and the posterior cranial fossa. Distant metastasis in this case is rare. क्या बात डिस्कस हुई बेटा? ट्यूमर कहाँ से निकल रहा है? ग्लोमस बॉडी से. ग्लोमस बॉडी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन, मे बी प्रेजेंट इन द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, मे बी प्रेजेंट इन द प्रमोंटरी. द ग्लोमस ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमस बॉडी प्रेजेंट इन द इंटरनल जुगुलर वेन, उसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमस जुगुलर. ग्लोमस ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमस बॉडी प्रेजेंट इन द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और द प्रमोंटरी, इट इज सेड टू बी द ग्लोमस टिम्पैनिकम. ठीक है, और फीचर्स आपको इसके मालूम हैं. इसके बाद अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो ओके, because with this tumor the middle ear is ultimately involved. So patient will have conductive deafness क्योंकि perforation हो जाती है tympanic membrane में. Patient will have tinnitus, vertigo. Patient will complain of the earache and the bloody discharge coming out of the ear, and multiple cranial nerve palsies. As I mentioned, the last 4 are involved, जिसमें facial nerve भी आ जाती है. 5th and 6th are also involved but rarely. एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो देयर विल बी द रेड मैस प्रेजेंट बिहाइंड द इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एज अ राइजिंग सन अपीयरेंस. वैसे तो जब ये ट्यूमर मिडिल ईयर में आता है तो बाद में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देता है, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करने से पहले अगर हम इसको एग्जामिन कर लें तो यू विल सी दैट देयर इज़ अ रेड कलर का बड़ा मैस मौजूद होता है ग्लोमस ट्यूमर, और बिल्कुल राइजिंग सन जैसे उभरता हुआ सूरज होता है उसकी अपीयरेंस दे रहा होता है. ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ज़रा यहाँ से देखते हैं. या रेड मैस बिहाइंड द इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, राइजिंग सन अपीयरेंस, एंड ओके, एंड इफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड, tumor mass
comes into the external auditory canal. Okay, and if you touch it, it will bleed on touching, right? How to make the diagnosis? बायोप्सी इज़ अवॉइडेड बिकॉज ऑफ सीवियर हेमरेज। जैसे कि हमने कहा कि ये टच पे ब्लीड करता है, बायोप्सी के कैसे लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप बायोप्सी लेने के लिए इस ट्यूमर को टच करेंगे किसी भी चीज़ से, इसका सैंपल लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा, ठीक है, तो इसलिए बायोप्सी अवॉइड करते हैं। हम करते हैं जुगुलर और कैरोटिड एंजियोग्राफी, ठीक है। It detect the blood supply of the tumor and the extent of the tumor, because ultimately the origin of this tumor is glomus body of the bulb of the internal jugular vein. Then why not to perform the jugular and the carotid angiography? ठीक है बेटा। और इस ट्यूमर की एक्सटेंट जानने के लिए कि ये कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका है, so you can perform the CT or the MRI. Okay, the treatment option is to surgically excise this tumor, and in extensive cases you can provide the patient with the radiotherapy to regress the tumor mass. After radiotherapy surgical excision is done. तो पहले आप रेडियोथेरापी दें, बाद में सर्जिकल एक्सिजन करें, और alone you can do the surgical excision. Right beta? So let me take you a little ahead. After this glomus tumor comes in another condition, that is the acoustic neuroma. Let me describe this to you. Lastly beta, the acoustic neuroma. Acoustic neuroma after the glomus tumor, it is the neurofibroma. It actually arises from the sheath of the Schwann cells of the cranial nerve number 8, that is the vestibulocochlear nerve. If this is the, let's suppose, your vestibulocochlear nerve, and this whatever nerve it is, but specifically we are considering the vestibulocochlear nerve. This outermost protective layer of the nerve, this is called the neurilemma. This is the neurilemma, right, the outermost protective layer, and it is made up of the supporting cells that are the Schwann cells. And this exactly is the site, Schwann cells, from where this tumor arises, right? It's a slowly growing tumor, non-invasive tumor. Slowly growing tumor, non-invasive tumor. It is firm, it is nodular, yellowish tumor, and it arises from, what is the exact site from where it arises? From the vestibulocochlear nerve. Point of emergence of nerve from the internal auditory meatus, mostly unilateral, एक साइड पे इन्वॉल्व करता है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो ये इंटरनल ऑडिटरी मीएटस से फ़र्ज़ करें, तो जब इंटरनल ऑडिटरी मीएटस में से आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व निकल रही होती है, तो पॉइंट ऑफ एमरजेंस ऑफ द नर्व फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटरी मीएटस, यहाँ पे ये ट्यूमर ग्रो करता है, ठीक है। मेल फीमेल में इंसिडेंस इसका सेम है, 30 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा ये होता है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो अकाउस्टिक सिम्टम्स तो आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व इन्वॉल्व हो रही है। सो देयर विल बी सेंसरी न्यूरल डीफनेस, लेस कॉमनली वर्टाइगो, but with deafness tinnitus is more common, obviously sensory neural deafness. Trigeminal symptoms क्यों, कि हालांकि vestibulocochlear nerve involved है, due to the obviously in the close proximity of the vestibulocochlear nerve, the facial nerve and the trigeminal nerves are present. So due to the compressing effects of this tumor, there will be the trigeminal symptoms as well, like the pain, tingling and numbness in any part where the trigeminal nerve is supplying, pain and tingling sensation on the face obviously, and there will be the diminished corneal sensation. You touch the cornea, there is no sensation, and the corneal reflex, that is actually when you touch the cornea, that reflex and that sensation is lost because of the affected trigeminal nerve. Okay. Headache, which is dull in character, and it occurs due to the dural irritation by the enlarging tumor, right? This can irritate the dura and producing the dull headache. There can be the cerebellar symptoms as well. When the tumor affects the ipsilateral cerebellar lobes, this growing tumor can affect the cerebellar lobe of the same side and can cause cerebellar symptoms like ataxia, Romberg sign positive आएगी, और dystiadochokinesia, जो भी cerebellar symptoms होते हैं. And also there will be the diplopia because of the intracranial pressure, raised intracranial pressure. There will be facial paralysis due to the involvement of the facial nerve, which is present in the close proximity of the vestibulocochlear nerve, and due to the compressing effects. Also there will be some terminal symptoms
like terminal symptoms that are the symptoms that occur in the very late stage, in very advanced stage, like blindness due to the papilla edema. इस ट्यूमर की वजह से इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से लाजमी पेपिल एडिमा होती है, दैट इज एडिमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। अगर आप खुद सोचें ऑप्टिक डिस्क की एडिमा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑप्टिक फाइबर्स अफेक्ट होंगे एंड अल्टीमेटली देयर विल बी ब्लाइंडनेस, and in the terminal and in the advanced stage there will be delirium and coma as well. The differentials of this acoustic neuroma, differential diagnosis जिसके साथ ये ट्यूमर कंफ्यूज करते हैं अक्सर लोग, like meningioma or the neuroma of the facial nerve can be confused with the neuroma of the vestibulocochlear nerve, and the congenital cholesteatomas and the aneurysm of the different blood vessels like the basilar artery, the cerebellar artery. So these are the conditions with which the acoustic neuroma of the vestibulocochlear nerve can be confused, right beta? Okay, अच्छा, acoustic neuroma of the vestibulocochlear nerve, the investigations to confirm the diagnosis is radiography is performed. इसमें दो चीज़ें हैं बेटा, हम इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, एक रेडियोग्राफी करते हो आप, ठीक है, और दूसरा एक आप परफॉर्म करते हो ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, राइट? दिस यू विल अंडरस्टैंड इन द सेपरेट चैप्टर, बट रेडियोग्राफी आप प्लेन रेडियोग्राफी भी कर सकते हो, CT MRI भी कर सकते हो, ठीक है? प्लेन रेडियोग्राफी स्टेनवर्स व्यू या फिर टाउनीज व्यू, दीज आर द व्यूज़ यू कैन यूज़ फॉर द प्लेन रेडियोग्राफी, एंड द CT MRI इज़ डन विद द gadolinium contrast which shows the mass on the vestibulocochlear nerve in the cerebellopontine angle, right? Okay, simple. And on the plane radiography you will find the funnel shaped widening of the internal auditory canal on the plane radiography. As I mentioned that this is the internal auditory canal, let's suppose, and this is the vestibulocochlear nerve rising coming out of the internal auditory canal, and this is the vestibulocochlear nerve. So the tumor exactly arises here at the site of the origin of the nerve from the canal, right? This is the tumor. If you perform the plane radiography you will see there will be funnel shape because this tumor is here, so it can compress and wide open the, you know, causing the funnel shaped widening of the internal auditory canal. तो ये बड़ा funnel shaped widening हो जाएगी internal auditory canal की because of this tumor, and you can detect it on the प्लेन रेडियोग्राफी, ठीक है बेटा? और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शन इज द सर्जिकल एक्सcision ऑफ द ट्यूमर बाय द डिफरेंट अप्रोचेस लाइक द ट्रांसलेब्रिंथीन अप्रोच, right? You can go through the middle cranial fossa, or you can perform you can use the retrosigmoid approach. These are the different approaches by which you can approach to the tumor and can surgically excise it, right beta? And this is all about this chapter of the neoplasias involving the ear. Thank you so much beta. Class dismissed.